इतने भयानक और भयावह हैं कि यहाँ कानून के शासक का राज है और शासक का आतंक है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर ने आज B.R. अम्बेडकर के मूर्ति पर माला समर्पित किया और उसके बाद उन्होंने CM ममता बनर्जी को जमकर फटकार लगाई और बताया यहाँ कानून का नहीं शासक का राज है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के हालात बहुत ही खराब है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा जगदीप धनकर ने। इतने भयानक और भयावह हैं कि यहाँ कानून के बजाय शासक का राज है और शासक का आतंक है। राज्यपाल की हैसियत से मेरे लिए चिंता है, चिंतन का विषय है। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़े प्रयास किए कि राज्य की शासन व्यवस्था, राज्य की कार्यपालिका, राज्य के अधिकारीगण संविधान के अनुरूप काम करें, कानून के हिसाब से काम करें। उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। सरकारी अधिकारी अपने नियमों को भूल चुके हैं, संवैधानिक मर्यादा को भूल चुके हैं। Their actions are far distanced from constitution. We need a climate which must be free of violence, respect for human rights, respect for democratic values, a bureaucracy that is transparent, accountable and acts according to rule of law and constitution. A bureaucracy which is not under the tight fist control of a political party. Outer limit is 48 hours. So take it very clear. No questions need be asked on this. The file is not pending with me. And I would appreciate if the media goes in the background of the Howdah bill. You will know what kind of a messy situation has taken place. Not only Howdah bill, local appointment, Human Rights Commission appointment, Information Commissioner's appointment, Rina Mitra's appointment. No file is pending. I've asked them very simple questions. Let me tell you, I'm a visitor. I have authority under the Act. They all agreed to come. Suddenly they formed a union. They signed a single document. It was taken from various places in the state to be signed by all. Where are we heading? Are these 11 chancellors and vice chancellors competent to run universities? There's such grave misconduct. I will not sleep over the matter. They will be called to full accountability. I'm at it.